And welcome to learning session number 7 of chapter number 4 of science 1, which is effects of electric current. So far, what all have we seen? We have seen introduction to terms like current, charge, potential difference, resistance, etc. And we had seen formulas. For example, power is equal to energy upon time, and voltage is equal to current into resistance, which is Ohm's law. Then we had seen how energy is transferred in a circuit, and we had seen Joule's law and its derivation, which says heat is equal to I squared RT. Next, we had seen heating effect of electric current, under which we had seen fuse wire and overloading. Next, we had seen magnetic effect of electric current. We had seen how a magnetic field is produced around a current carrying current conductor. To uh, to determine the direction of that magnetic field, we had seen right hand thumb rule. Then we had seen magnetic field produced by current through a circular loop, and we had seen magnetic field due to a solenoid. Okay. Then we had also seen that if you keep a current carrying conductor in a magnetic field, it always experiences a force. And to determine the direction of that force of on a current carrying conductor in a magnetic field, we have Fleming's left hand rule. And then we had seen electric motor, and I did not make a different video for electric motor. I had just sent Khan Academy's video on electric motor, which explains this the working of electric motor beautifully. Okay. So if you haven't seen the video yet, please go and watch this video first. Okay, I will give the link to this particular video in the description of this video. Okay, the topics we'll cover today, first is electric motor. We're going to quickly revise electric motor. Then we are going to see electromagnetic induction, galvanometer, Faraday's law of induction, and Fleming's right hand rule. Okay, so objectives for today will be this is not today's objective, to be honest. This objective was for the last video, which is the Khan Academy's video. Okay, so if you watch that video, at the end of that video, you all should be able to explain the principle and working of electric motor using the diagram of electric motor. Okay, for today, you should be able to explain electromagnetic induction. Students should be able to recognize and explain the meaning and purpose of a galvanometer, and students should be able to recall and state Faraday's law of induction and Fleming's right hand rule. Okay, so many objectives we have for today, so make sure you're focusing and paying a lot of attention in today's learning session, because if you understand today's learning session very well, all these objectives will be met. Okay, so first, quickly let us revise Fleming's left hand rule. Okay, so first they tell you to stretch your index finger, your middle finger and thumb such that all of three are at right angles with each other. These two have to be at right angles with each other, these two should be at right angles with each other, and these two should be at right angles with each other. Okay, perpendicular matlab 90 degrees. Okay, so once you do that, then your index finger is going to give the direction of magnetic field, your middle finger is going to give the direction of current, and your thumb is going to give the direction of force. Okay, ये force कहाँ से आया? We have already seen, right? Whenever you keep a conductor and pass electricity through it, and you keep that conductor in a magnetic field, it is going to experience a force, right? So force का direction कैसे मिलेगा तुम्हें? Using Fleming's left hand rule. तीनों उंगली को stretch कर दो. If index finger gives direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then the thumb will give the direction of force. Okay, so you need to understand Fleming's left hand rule first so that you understand electric motor. Okay, so if you haven't understood Khan Academy's electric motor wala video very well, revise Fleming's left hand rule and then watch it again. Okay, and electric motor is generally a difficult concept to understand. Okay, uska working thoda complicated hai, so you might have to watch the video 1 time, 2 times, or even 3 times. Okay, great. So let us quickly revise what is electric motor. Okay, so it is a device which changes electrical energy into mechanical energy. Okay, what is mechanical energy? Whenever there is movement, you call it as that object to have mechanical energy. Okay, so in an electric motor, battery से वो energy ले लेता है electric motor and उसको rotational energy में convert कर देता है, right? So it's using electrical energy and converting into mechanical energy. Okay, that's called as electric motor, and it is used in fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, pumps, etc. So it has wide scale applications. So electric motor and electric generator, which we are going to learn in
another 1 or 2 learning sessions. These 2 topics are very important from board point of view. Why? Because they have large scale applications in our day to day life. So गलती से भी इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर को ऑप्शन में नहीं छोड़ना, उसको समझना ही है तुम लोग को. Okay. So these are the diagrams for electric motor given in Khan Academy's video, and this is the diagram given in your textbook. Okay, so let us discuss what are the similarities and differences first. The first difference is यहाँ पे नॉर्थ पोल मैग्नेट का राइट साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में. ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, सो राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में है. क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ लेफ्ट साइड में और साउथ राइट साइड में है, एंड वी ऑल्सो नो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी राइट साइड में जाएंगे. ओके, अनदर डिफरेंस इज यहाँ पे ये जो रिंग है पिंक कलर का और ब्लू कलर का, इसको यहाँ पे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोला था. whereas यहाँ पे इन योर टेक्स्ट बुक दे आर ओनली कॉलिंग इट एज स्प्लिट रिंग्स. ओके, बस नाम अलग है बट द फंक्शन रिमेन्स द सेम. ओके, so these are called split ring commutators in this particular video, and in our textbook they are only called as split rings. Okay, next there is no axle here, whereas यहाँ पे सेंटर में axle रख दिया. Why is axle kept here? जैसे हवा में नहीं रह सकता, राइट, उसको रोटेट होना है. कॉइल के साथ साथ ये स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट होने वाले. सो फॉर इट टू रोटेट उसको किसी ना किसी चीज का सपोर्ट लगेगा, वो ऐसे हवा में नहीं रुक सकता, राइट. सो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए एक्सल देते हैं, और एक्सल के आजू बाजू ये स्प्लिट रिंग्स आर गोइंग टू रोटेट. Okay, so those are the differences. Everything else remains the same, principle remains the same, working remains the same. Okay, so I'll quickly revise the working. Okay, so if you see यहाँ पे left side का जो split ring है, that is connected to the positive terminal of battery of cells, and right side का जो split ring है, it is connected to negative terminal of battery of cells. Okay, so how is the current going to move from here? It is going from A to B to C to D, and वहां से वापस ये F वाले कार्बन ब्रश पे आ जाएगा. Okay, so you know that firstly you know that there is a magnetic field here, right? नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. सेकेंडली यू नो करंट इज पासिंग फ्रॉम A to B. So what have we just learned? Whenever you keep a current carrying conductor in a magnetic field, it is going to experience a force. तो force का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा. So let us see the direction. Okay, so if you see इस वाले वीडियो में it was moving in clockwise direction, right? कॉइल हमेशा clockwise direction में मूव कर रहा था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट. इसलिए यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो लेट अस सी द चेक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो AB इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड N to S या फिर लेफ्ट टू राइट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यू विल हैव टू यूज योर लेफ्ट हैंड. ओके, when you're watching this video, you will have to take out your left hand and actually do this by yourself to understand it well. So the index finger gives the direction of magnetic field, right? So left to right जा रहा है, so मैंने अपना उंगली ऐसे रख दिया. Okay, left to right is the direction of magnetic field. Now current is going from A to B, यानी बाहर से लेके अंदर जा रहा है. So my middle finger will give the direction of current. So ये बाहर से लेके अंदर मैंने ऐसे कर दिया. Okay, so magnetic field का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन. तो अभी थंब कैसे नीचे आ जाएगा, राइट. मेरा थंब नीचे आ रहा है, यानी ए बी पे डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ. ओके, सिमिलरली सीडी पे करंट कैसे है, सी से लेके डी तक. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेफ्ट टू राइट. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा. बट अभी करंट पहले कैसे अंदर जा रहा था, राइट, बाहर से लेके अंदर. बट अभी ये वापस बाहर आएगा फ्रॉम सी टू डी. हाउ शुड आई शो दिस? ओके, सो ये बाहर आने वाला करंट अंदर से बाहर, C to D. So what will be the direction of my thumb? My direction of my thumb is upward, right? Direction of magnetic field left to right, direction of current अंदर से बाहर. So direction of thumb which is force ऊपर जाएगा. So AB पे नीचे है force, CD पे ऊपर है force. Okay, so because of that अभी ये ऐसे rotate करने वाला है. It is going to rotate in anti-clockwise. Now once it rotates in anti-clockwise, यहाँ तक आ गया. ओके, ऐसे ऊपर तक आ गया. अभी ये ऊपर खींच रहे हैं, नीचे खींच रहा है, तो अभी इसको घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा. जैसे ऊपर आएगा फिर भी ये आगे मूव करेगा. ओके, अपने आप. ओके, बिकॉज रुकने के लिए भी थोड़ा फोर्स लगता है, तो रुकने वाला कोई फोर्स आ नहीं रहा है. सो फोर्स ऐसे है तो ये ऊपर तक आएगा और अपने आप यहाँ तक चले जाएगा, राइट, यहाँ तक आ जाएगा.
बट वंस इट कम्स फ्रॉम हियर टू हियर, अभी यहाँ पे वापस ऊपर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा है, तो वापस पीछे आ जाएगा। सो ऐसे करते रहेगा, ओके, क्योंकि फोर्स हमेशा ऊपर और नीचे। सो वंस इट कम्स हियर, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, अगर उसको सेम डायरेक्शन में मूव करते रहना, तो ऐसे चेंज होते रहना चाहिए फोर्स। सो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज टू चेंज, इसलिए कम्यूटेटर होता है। ओके, तो एक बार CD राइट साइड में आ गया और AB लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये वाला जो कम्यूटेटर है ये भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और एज दिस इज स्प्लिट रिंग, इन योर टेक्स्ट बुक दे कॉल इट एज स्प्लिट रिंग। सो F वाला स्प्लिट रिंग, एक्चुअली Y है इसका नाम, सो Y वाला स्प्लिट रिंग लेफ्ट में आ जाएगा, X वाला लेफ्ट स्प्लिट रिंग नीचे से राइट साइड में आ जाएगा। सो जैसे ये हो गया तो CD के अभी CD विल बी नाउ बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो अभी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, राइट, वो गैप की वजह से यहाँ से करंट वहां नहीं जा रहा, यहाँ से कॉइल में जा रहा है। सो जैसे ही वो स्प्लिट रिंग्स चेंज हो गए, सो अभी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जैसे ही यहां से लेके यहाँ पे आ गया, तो अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होके वापस उसको कंटिन्यू करेगा। सो इट विल कीप मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, so that's basic concept of electric motor. Okay, it was very well explained in this particular video. I'm telling you all, if you all haven't understood it well enough, this was just a revision. Okay, मैं बस रिवाइज करवा रहा था. If you need to understand each and everything about the working of an electric motor, do watch this video again and again. The more times you watch this video, the better you will understand. Okay, so that was your electric motor, and I have told you all to draw the diagram, right? ये वाला diagram मत draw करो. Draw the diagram given in your textbook for practice. Okay. Okay, so this experiment we have already seen, right? What is happening in this experiment? A current carrying conductor is kept in a magnetic field. So जब भी current carrying conductor को magnetic field में रखते हैं, तब उस पे एक force आ जाता है. Okay, that we have already seen. So based on this, I want to ask you all two questions. First question is, what will happen if an electric conductor is moving in a magnetic field? Okay, magnetic field वैसे के वैसे रखा है, but अभी वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है. They are not saying current carrying conductor, they are only saying a conductor, an electric conductor जिसमें करंट पास नहीं हो रहा है. So एक वायर रख दिया, ओके, और एक मैग्नेट रख दिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अभी उस वायर को मैं मूव कर रहा हूँ. ओके, आई एम मूविंग द वायर एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे क्या करंट अपने आप पैदा होने वाला है क्या? दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 1. Second question, what will happen if the magnetic field around the stationary conductor is changing? Okay, so stationary conductor, right? Stationary यानी वहीं पे रखा है. Again, अभी वायर में से मैं करंट पास नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वायर रखा है मैंने और उसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं. हाउ विल आई चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट? बाय मूविंग द मैग्नेट. इफ आई मूव द मैग्नेट, उसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा. तो इसमें अपने आप से करंट पैदा होने वाला है क्या? स्टार्टिंग में उसमें कोई करंट नहीं था. ओके, सो in order to find out the answer to this question, research was done by great scientist. ये लोग भी great बोल रहे हैं. Okay, I also like the scientist a lot. Micheal Faraday. Okay, he did some experiment and research to find out the answer to these questions. So in year 1831, so बहुत पहले की बात है. Okay, it's almost 200 years back. 200 साल पहले इसने ये सब कर रखा. Okay, so तुम लोग जो साइंस पढ़ रहे हो 200 साल पुराना है. अभी जो पिछले 10-15 साल में साइंस हुआ है वो सिर्फ PhD वाले पढ़ते हैं. जनरली तुम लोग को पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा. सो तुम लोग अभी जो कुछ भी साइंस पढ़ रहे हो वो सब 200 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने पढ़ रखा है. ओके, ग्रेट. सो इन ईयर 1831 Faraday showed that an electric current is produced in a conductor with the help of moving magnet. ओके, मैग्नेट को तुम लोग मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा. इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो? तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो सेटअप है, यहाँ पे समझो तुम लोग ने बैटरी नहीं लगाया. ओके, यहाँ पे बल्ब लगा दिया. ओके, इंस्टेड ऑफ बैटरी यू हैव पुट अ बल्ब ओवर हियर. ओके, सो बिकॉज देयर इज नो बैटरी, इस वायर में करंट नहीं फ्लो होगा. देयर इज नो करंट इन दिस वायर एंड इंस्टेड व्हाट यू डूइंग इज, इस मैग्नेट को तुम लोग मूव कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो. सो इफ यू मूव द मैग्नेट अराउंड एंड यहाँ पे कोई वायर में करंट नहीं है, सिर्फ बल्ब लगा है यहाँ पे, सो मैग्नेट को घुमाने की वजह से उसमें करंट आ जाएगा. बिना बैटरी के करंट आ रहा है. ओके, don't you think it's very weird? Okay, and it's very interesting. Okay, the first time I really heard about this, and so the first time I saw about this was in a documentary. I told you all, right? Micheal Faraday पे एक documentary देखा था मैंने. So that was the first time I came to know कि बिना बैटरी के भी तुम लोग को करंट मिल सकता है. कैसे मिल सकता है? उसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो. सो इट्स लाइक यहाँ पे बैटरी मत लगाओ, यहाँ पे बल्ब लगाओ और इस मैग्नेट को मूव करो, तो तुम लोग को यहाँ पे जो बल्ब है वो जलने लगेगा.
क्यों? क्योंकि मैग्नेट को मूव करने की वजह से इसमें करंट पैदा हो रहा है। ये किसने दिखाया था? माइकल फैराडे ने इन ईयर 1831, ऑलमोस्ट 200 years back। ओके, so to understand that experiment or the research done by Michael Faraday, you need to know galvanometer. Okay, they have cancelled this from your portion for this year, but unless and until you know this, you won't be able to understand the experiment. So you need to know galvanometer. What is galvanometer? It is a device which measures current. So और एक device है जिसको बोलते हैं ammeter, उसका भी काम यही है, करंट को मेजर करना है, और गैल्वेनोमीटर का भी काम वही है, करंट को मेजर करना। व्हाट्स द डिफरेंस देन? द डिफरेंस इज गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होता है वो सेंटर में होता है। ओके, सो करंट, if there's current in the circuit, then ये जो पॉइंटर है ये मूव करने लगेगा। ओके, then the rotation will be proportional to the current। ओके, अगर बहुत ज्यादा करंट आएगा तो ये बहुत ज्यादा मूव करेगा ये पॉइंटर। ओके, और बहुत कम करंट होगा तो कम मूव करेगा ये पॉइंटर। ओके, and last point is it can detect both positive and negative current। okay, so अगर समझो if I run to the right hand side, then you will say my velocity is positive। if I run to the left hand side, you will say my velocity is negative। similarly current का direction जब change होता है वो इसको भी measure कर सकता है। okay, so when there's positive current it will move to the right side, when there's negative current it will move to the left side। that's the advantage of a galvanometer, both positive and negative current it can measure। okay, so now let us move on to the experiment। We're going to do 3 experiments, and through these 3 experiments, we're going to understand what Michael Faraday was found out। So first experiment, what we are doing, we have a wire, and इस wire को galvanometer से connect किया। okay, and we have a magnet over it। magnet को वहीं पे रखेंगे हम लोग, और इस wire को move करेंगे। okay, I'm repeating once more। एक वायर है, वायर में कोई भी करंट नहीं है क्योंकि बैटरी नहीं लगा यानी करंट नहीं है। सो वायर को सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? करंट आ रहा है कि नहीं वायर में, इसको चेक करना। एंड वी हैव अ मैग्नेट ओवर हियर, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मूव दिस कंडक्टर। ओके, वी आर गोइंग टू मूव दिस वायर को हिलाने वाले हैं, एंड वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो हियर आई हैव अ स्मॉल गिफ ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है एंड यहाँ से एक वायर अटैच किया है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल एक वायर जा रहा है, कहीं पे भी बैटरी नहीं लगा। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर में दिख रहा है दैट इज द मैग्नेट। ओके, यहाँ पे जैसा मैग्नेट है वैसा नहीं लगा है, यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप का मैग्नेट है। सो हियर इन द ब्लैक कलर दे हैव मैग्नेट, एंड व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज मूविंग द कंडक्टर को चेंज कर रहा है। सो इफ यू सी यहाँ पे रीडिंग बता रहा है करंट के लिए, गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो थोड़ा हिल रहा है। इफ यू वांट आई कैन जूम इन। ओके, सो यहाँ पे तुम लोग को इजीली दिख जाना चाहिए कि जैसे वो इस वायर को चेंज कर रहा है, मैग्नेट वही के वही है बट वायर को ऊपर नीचे कर रहा है, देन इट इज शोइंग सम करंट। ओके, सो बैटरी है नहीं बट फिर भी करंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस कंडक्टर को मूव कर रहा है। दैट्स एक्सपेरिमेंट नंबर 1। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक सोलोनॉइड ले लो, सोलोनॉइड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, और उस सोलोनॉइड के बाजू में ही एक कॉइल लगा दो, और कॉइल से क्या कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर। अगेन गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका इंडिकेशन देना। ओके, सो इफ यू यहाँ पे ब्लू में क्या है? ब्लू में इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बी इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो यू नो हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलोनॉइड लुक लाइक, राइट? The magnetic field of solenoid looks like this। we have already seen this। so इसका जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर भी जाने वाला है। so मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सोलोनॉइड से अंदर जाके इस कॉइल से भी कॉइल के अंदर से भी जाने वाला है, राइट? सो कॉइल के आजू बाजू भी मैग्नेटिक फील्ड है। सो द मोमेंट यू स्विच ऑन द सर्किट ओवर हियर, ओके, ये सोलोनॉइड का सर्किट को तुम स्विच ऑन करोगे, व्हाट यू सी इज गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा करंट दिखाता है। अगेन वापस तुम स्विच ऑफ करोगे तो वापस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा करंट दिखा के वापस जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? जब करंट चेंज हो रहा है, सॉरी, व्हेन यू स्विच ऑन द सर्किट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल के आजू बाजू का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है, राइट? सो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है देयर इज सम करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके, लास्ट एक्सपेरिमेंट, this experiment is not given in your textbook, I have just found it by myself। okay, and I have done this experiment many times in the physics lab of my college, and it's a very fun experiment। again what they have done is यहाँ पे there is a galvanometer, and they have connected the galvanometer to a coil or solenoid of copper। so and what they are doing is they are putting a magnet inside the coil। so जैसे वो magnet अंदर लेके आ रहा है, whenever he is taking the magnet inside the coil you can see some deflection, और जब अंदर से बाहर लेके जा रहा है then also you can see some deflection।
राइट. एंड यू कैन ऑल्सो सी जब अंदर लेके आ रहा है तब राइट साइड में जा रहा है, जब बाहर लेके जा रहा है मैग्नेट को तब लेफ्ट साइड में जा रहा है. सी, so now he'll put it inside, okay, and it will go on right side. See, it went to the right side, and once he takes it out, it goes to the left hand side. So इसका मतलब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कॉइल के आजू बाजू तो बिना बैटरी के करंट पैदा हो रहा है. Okay, so these three experiments prove that a current is produced. Okay, so the answer to our questions were, what will happen if electric conductor is moving in a magnetic field. इसका कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ये वाला, राइट. इलेक्ट्रिक कंडक्टर मूव हो रहा है, इसमें चार्ज नहीं है, ओके, इस वायर में चार्ज नहीं है, बट कंडक्टर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट से आ रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर में मैग्नेट रखा है. सो मैग्नेटिक फील्ड में जब कंडक्टर को यू आर मूविंग, you get a current. Okay, so the answer to your first question will be a current will be generated. Okay, next, what will happen if magnetic field around the stationary conductor is changing. यानी तुम कंडक्टर को वैसे के वैसे रखो बट उसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो. ये कैसे कर रहे हो, यहाँ पे कर लो, राइट. तुम कंडक्टर को हिला नहीं रहे हो, कंडक्टर को वैसे के वैसे रख रहे हो, बट आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर रहे हो, मैग्नेट को पास में लेके आके और दूर लेके जाके, राइट. सो व्हेनेवर यू ब्रिंग द मैग्नेट क्लोज और टेक इट आउट, you are changing the magnetic field around the conductor. So what is happening then, even then you can see some deflection in galvanometer, which means current is generated. So in दोनों cases में current generate होता है. Okay, so that is called as, I mean, that is given by Faraday's law of induction. Okay, all these experiments were done by Faraday. So what is Faraday's law of induction? When magnetic field in a coil changes, what is coil? Coil is basically conducting wire. Okay, coil is conducting wire. So whenever magnetic field in a coil changes, current is induced in the coil. Okay, अब तक मैं कौन सा word use कर रहा था, generated, but instead of using the word generated, you can use the word induced. Okay, so a current is induced in the coil. Induce यानी पैदा हो जाता है, it gets generated. So that's Faraday's law of induction. You need to by heart this particular law. Okay, और ये याद कैसे करना है, through all the experiments. हम लोग ने जो कुछ भी experiments अभी देखे हैं उसको याद करो. Okay, the current produced in the coil is called induced current. Okay, इसको induced current क्यों बोलते हैं, क्योंकि normal current नहीं है. Normal current कैसे बनता है, using batteries, right? Using batteries you get normal current, but this is not normal current. This is current because of change in magnetic field. तो ऐसे current को induced current बोलते हैं. And lastly, induced current will be maximum when the direction of motion of the electric conductor is perpendicular to magnetic field. Okay, so अगर magnetic field एक direction में है तो वो जो चेंज, वो जो मोशन है, ओके, जो कुछ भी मूव हो रहा है, वो जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए. जब भी वो मूवमेंट परपेंडिकुलर होगा तभी इंड्यूस्ड करंट सबसे ज्यादा पैदा होगा. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट लास्ट पॉइंट. व्हेनेवर यू आर मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, दो ऑप्शन है, राइट. या तो तुम कंडक्टर को मूव करो या फिर तुम मैग्नेट को मूव करो. सो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तब मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा. ओके, दैट्स योर लास्ट पॉइंट. What will be the direction of the induced current? अब ये जो induced current पैदा हो रहा है उसका direction क्या होगा? Okay, direction is very important in physics. Okay, that's why you will see there are so many laws to tell direction of different things. So what will be the direction of the induced current? किस direction में आएगा induced current? उसके लिए we have Fleming's right hand rule. Okay, बहुत सारे rules हो गए, right? There was right hand thumb rule, there was Fleming's left hand rule, which we used to understand the electric motor. Now we have Fleming's right hand rule. Okay, what does right hand rule say? It's very similar to Fleming's left hand rule. Okay, so stretch thumb, index finger and middle finger such that all of them are perpendicular to each other. So ऐसे कर दो right hand के साथ. Next, the position of thumb indicates direction of motion of the conductor. अगर तुम कंडक्टर को हिला रहे हो, then उसको जिस direction में हिला रहे हो, that direction will be given by the thumb. Next, index finger will give the direction of magnetic field. Okay, so ये same है. Fleming's left hand rule में भी index finger magnetic field का direction दे रहा था, right? तो ये same रहेगा. And middle finger shows the direction of induced current. So ये जो middle finger देगा ये induced current का direction देगा. Okay, so that's very simple, very similar to Fleming's left hand rule. So till now we have seen 3 rules for different things, right? And I promise there are only 3 rules. Okay, there are no more rules in this particular chapter, right? So there is right hand thumb rule, Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule, and all of these 3 will be used at different places. So if you're in if any time there's confusion as to which rule to apply when, then you can just refer to this particular
page or these 3 points. Okay, when do you use right hand thumb rule for? You know that whenever you pass electric current from a conductor, there's a magnetic field around it. So इस magnetic field का direction find out करना होगा, then you will use right hand thumb rule. What is Fleming's left hand rule? You know that जब भी you keep a current carrying conductor in a magnetic field, that current carrying conductor will experience a force. To find that force, you will use Fleming's left hand rule. And right now we have just seen that whenever the magnetic field around a wire changes, then there is some induced current. Without battery, there will be some current. So to find the direction of that induced current, when magnetic field around the coil changes, you will use Fleming's right hand rule. So all of these three rules are different. Okay, all of them have different rules and all of them have different applications. So you need to know all three rules by heart, and you should know when to use which rule. Okay, so let me quickly revise whatever we have seen today. First is, we saw that current will be induced. Okay, without induced ka matlab kya? It will be generated without using battery. Okay, without battery, current will be generated when there are two cases. When electric conductor is moving in a magnetic field को वैसे के वैसे रखा है, but conductor को तुम move कर रहे हो, तो उसमें current आ जाएगा. Second क्या है? Magnetic field around a stationary conductor is changing. Okay, so कंडक्टर को वैसे के वैसे रखा है, स्टेशनरी यानी नॉट मूविंग. सो कंडक्टर को वैसे के वैसे रखा है, और उसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. देन अगेन देयर विल बी सम करंट दैट विल बी इंड्यूस्ड. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ Faraday's law of induction, and the direction of the induced current is given by Fleming's right hand rule. These are the major takeaways for this particular learning session. Okay, so just check if you have accomplished today's learning objectives. The first objective was, you should be able to explain the principle and working of electric motor using the diagram. You should be able to draw the diagram of electric motor by yourself, not the diagram given in Khan Academy's video. Okay, you should draw the diagram from our textbook, and you should be able to explain the principle and working. Next, can you explain electromagnetic induction? Can you recognize and explain the meaning and purpose of a galvanometer? And can you recall and state Faraday law of induction, उसका जो एक sentence है, and can you recall and state Fleming's right hand rule? Okay, so just check if you have accomplished all the learning objectives for today. Okay, so that's it for this learning session. I hope you understood and had fun. The first time I understood कि बिना बैटरी के करंट बन सकता है, I was blown away. I mean, that was the most exciting thing I've ever learned in physics. I hope you also had a similar effect when you came to know that बिना बैटरी के भी करंट बन सकता है, and that all that is because Faraday's law of induction. That's why I like this scientist called Faraday a lot. Faraday का जो बैक स्टोरी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, Faraday was not a scientist. बेसिकली तभी बुक्स से ही नॉलेज बढ़ता था, राइट, 1830s में. ओके, सो बुक्स भी बहुत लोगों के पास नहीं होता था. बहुत जो पैसे वाले लोग होते थे उनके पास ही बुक्स होते थे. सो बुक्स को मशीन नहीं बनाते थे, बुक्स को ऐसा मैन्युअली उसको सीलना पड़ता था. ओके, दे यूज्ड टू बी बाउंड टुगेदर यूजिंग हैंड. ओके, सो Faraday ऐसे एक बुक कंपनी में एक असिस्टेंट था. सो उसमें जाके बुक्स वगैरह पढ़ लेता, उसको साइंस में इंटरेस्ट था, एंड देन ही डिड ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय हिमसेल्फ, साइंटिस्ट ना होते हुए भी. ओके, और उसने ये डिस्कवरी किया. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Faraday's का जो बैक स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है. Faraday का जो लॉ है कितना इंपॉर्टेंट है. तुम लोग अभी जब ये वीडियो देख रहे हो, somewhere some fan must be working, right? वो fan जो भी work कर रहा है, that is because of Faraday. Okay, so give your thank you to your to the scientist called Faraday that you have fan in your home today. Okay, so that's it for this learning session, and I hope you all enjoyed it, and I hope we'll see each other in the next one. Till then, see you guys, and bye.